Class 12 students, welcome to the online classes, videos. Now today we discuss the word problem maximum minimum. In previous video, we also discussed the word problem questions, and in this video we are also again discuss the word problem question, because this is the very important, and every year 6 marks you get in board examination, one question. Then again we repeat how can you solve the word problem questions. Now we again repeat the questions. Now word problem questions, NCERT, see the NCERT question. Question number 17, exercise 6.5. I give the homework, but some question I discuss. A square, the question is the A square piece of a tin. A square piece of a tin of side 18 centimeter is to be made into the box. Made it without the top by each cutting the square from the each corner and folding up the flap to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? देखो एक स्क्वायर बॉक्स है, one square box. This is the question number 17. Question number 17. This is the question 17. NCERT. Question 17. NCERT. This is the question number 17 NCERT. Now a square box. What is the question? A square box. Suppose this is a square box. And a square box. This is a square. A square piece of the tin. This is a square piece of the tin. This is the square piece of the tin. अब इस tin को क्या करना है आपको? फोल्ड करके बॉक्स बनाना है. और कैसे फोल्ड करना है? It is given a square piece of the tin. The side is the 18 centimeter. This is the 18 centimeter. This is the 18 centimeter. This is also 18 centimeter. This is also 18 centimeter. And और ईच कार्नर पे आपको स्क्वायर, देखो ईच कार्नर पे कट करना है. आप इसको कट करना है, इसको ऐसे एक स्क्वायर कट करना है. क्या बोला? ए स्क्वायर पीस ऑफ द tin 18 centimeter is made into the box without top. बिना टॉप के एक बॉक्स बनाना है. और बाय द कटिंग स्क्वायर, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर को ऐसे कट करना है. एक स्क्वायर को ऐसे कट करना है. और कट करने के बाद इसको आप क्या करना, इसको निकाल देना है. स्क्वायर को निकालने के बाद फोल्ड करना है और फोल्ड करके बॉक्स बनाना है. अंडरस्टैंड? आप देखिए, सपोज अभी आपसे ये ईच कार्नर से एक स्क्वायर कट करना है और इसको फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बनाना है. ऐसा बॉक्स विदाउट टॉप, जिसका टॉप ना हो, आप उस ऐसा बॉक्स बनाइए. सपोज करो कि अब ईच कार्नर पे हम कट करेंगे और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे. इस पोर्शन को ऐसे हम निकाल देंगे. इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से.
इसको निकाल देंगे, ये ऐसे निकाल देंगे, ये स्क्वायर चारों तरफ से निकाल देंगे और उसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसको फ्लैप कर देंगे। फ्लैप करने के बाद अब ये हाइट हो जाएगा, ये भी फ्लैप हो जाएगा, ये भी हाइट हो जाएगा, ये भी हाइट हो जाएगा और लेंथ, ये आपका लेंथ हो जाएगा। दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ और हाइट क्या होगा। सपोज 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 दिस इज एक्स। सपोज आपने क्या किया, एक्स जो है एक्स सेंटीमीटर कट किया और इधर भी हमने एक्स सेंटीमीटर। ईच कार्नर से हमको क्या करना है, ईच कार्नर से स्क्वायर कट करके उसको निकाल देना है और कट निकालने के बाद उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाना है जो विदाउट टॉप यानी ओपन बॉक्स हो। तो कह रहा है कि किस तरह से कट करें, ये स्क्वायर का चारों कार्नर के जो स्क्वायर हैं वो कैसे कट करें ताकि जो इसका जो वॉल्यूम आए वो मैक्सिमम आए। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम। नाउ दिस इज द लेंथ, लेकिन आपने एक्स यहाँ भी कट किया, एक्स यहाँ भी कट किया, तो लेंथ क्या हो जाएगा। अब ये लेंथ जो होगा ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x लेंथ हो जाएगा। और ब्रेथ क्या हो जाएगा, जो ब्रेथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 18 माइनस 2x होगा, 18 माइनस 2x होगा। क्योंकि जो 3 है, 3 आर इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, तो जो लेंथ होगा वो ब्रेथ होगा और हाइट क्या होगा, ये एक्स जो बचे हुए फोल्ड होकर ऊपर जाएगा तो ये इसका हाइट हो जाएगा। दिस इज द हाइट। देन व्हाट इज द हाइट, द हाइट इज द एक्स। देन अ बॉक्स इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। अब बॉक्स किस शेप में होगा, क्यूबॉइड शेप में होगा, इसका टॉप नहीं होगा, ओपन होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू L into B into X, L into B into X। Then what is L? ये लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज आल्सो 18 माइनस 2x। ब्रेथ जो होगा वो भी हो जाएगा 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और जो हाइट होगा, हाइट क्या होगा x सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम। अब किसको मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है, वॉल्यूम। क्या पूछा जा रहा है कि किस तरह से चारों कार्नर के स्क्वायर कट करें कि जो वॉल्यूम आए तो वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। नाउ वॉल्यूम L into B into X, 18 minus 2x into 18 minus 2x into x. Then what is the volume? The volume is x into 18 minus 2x का whole square. Now, this is the equation. Now differentiate this. Now differentiate the first order and equate by the 0. Now the dv upon dx, the dv upon dx, first function, second का differentiation क्या हो जाएगा 2 18 minus 2x into minus 2, first function second का differentiation plus second function 18 minus 2x the whole square into x. Now 18 minus 2x, 18 minus 2x हुआ क्या करो काम, you take the common 18 minus 2x. Now this is the minus 4x, 2 into 2, this is the minus 4x plus 18 minus 2x. Now this is the equal to
18 minus 2x in one bracket, and in the second bracket this is the 18 minus 6. This is the 18 minus 6. Then the dp upon dx. This is the dp upon dx. अब dp upon dx को क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे. When dp upon dx is the 0, when dp upon dx equal to 0, this is implying 18 minus 2x equal to 0, then x is the 9 centimeter. Now, when 18 minus 6x is the 0, then x equal to 3 centimeter. X is the 3 centimeter. Now, अब इसको क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर. Now you find the second order derivative. Second order derivative. Then the dp upon dx is equal to 18 minus 2x. 18 minus 2x, or this is the 18 minus 6x. Now, so differentiate again the differentiate d2d upon dx square. First function 18 minus 2x, second का differentiation d2 minus 6 plus second function 18 minus 6x into minus 2. Now 18 minus 2x, and you multiply. Now you take the, I think you take the minus 2 is the common. You take, now this is the 2 in common in bracket, 2 is also in common, 2 is common. Now take 4 in the common. Now you take minus 4 in the common. Minus 4 in the common. Now then this is the 3, and this is the 9 minus x. 3 is 9 minus x, and this is the also minus is common. Then this is the 9 minus 3x. 2 is common also in bracket. The 9 minus 6x. Then this is the minus 4. 27 minus 3x plus 9 minus 3x. Then this is the minus 4, 27 or 9, 27 and 9, this is the 36 minus 6x. 36 minus 6x. Now this is the second order derivative. Now you put the value. Now put x equal to 9. When you put x equal to 9, then this is the positive. 9 into 3. 9 into 3, 27. 9 into 6. 9 into 6, 56. Then this is the minus, and this is also minus. At x equal to 9, this is the positive. At x equal to 9, this is the positive. At x equal to 9, the d2d upon dx square is positive. And x equal to 3, and x equal to 3, and x equal to 3, d2b upon dx square is negative. The negative sign shows the x equal to 3 is the maximum. X equal to 3 is maximum.
यानी कि आप क्या करोगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर चारों तरफ कट करोगे। यदि आप सिंपल सी बात है, यदि आप 9 कट कर लोगे, टोटल 9 है, नाउ यू कैन कट हियर 9 and 9, then this is the fourth part, then how can you make the box? But x equal to 3, if you cut the 3 centimeter each corner, then and fold it, you made the open box. Understand? Now the x equal to 3. Now the x equal to 3. The volume is the maximum. The volume of the open box is the maximum. Understand? Firstly, okay. How can you solve this question? First you make the equations, and in the next question, this is the same question 18, and this is the rectangle. Length and breadth are different, then L and B are the different, and the equations are the same, and you solve the questions. Now we discuss the next question. Now we discuss the next question. रुक गया। Now discuss the question number 23. Many years this type of the question in the board examination. Now we discuss the question number 23. Question number 23. Question number 23 NCERT. Question 23. NCERT. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in sphere of the radius r is the 8/27 of the volume of the sphere. Again, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in the sphere of the radius r is 8/27 the volume of the sphere. Now, what is the question? एक स्फीयर में एक कोन को फिट किया गया, तो जिसमें हम फिट करते हैं, स्फीयर में फिट किया गया, तो स्फीयर का जो रेडियस है वो बिहेव करेगा एज ए लाइक ए कांस्टेंट। वेरिएबल कहाँ मिलेंगे? वेरिएबल मिलेगा हमको कोन इन द कोन, और कोन में 2 वेरिएबल होगा, एक रेडियस होगा और एक उसका हाइट होगा। 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे और एक वेरिएबल में इक्वेशन बना के उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? सपोज दिस इज द स्फीयर, this is the sphere. Now, and this is the center, and this is the cone है जो स्फीयर में फिट इंस्क्राइब किया गया है। Now,
A, B, C, D. This is the sphere of the radius R. तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ the volume of the largest cone that can be inscribed in the sphere is the 8/27 of the volume of the sphere, and the radius of the sphere is the R, and this is the R. This is the R. This is the radius. This is the radius. Now suppose this is the radius, then this is the also radius. This is the R. Suppose this is the X. This is the X. This is the X. Now in triangle OBD, BD is under root R square minus N. What is the BD? BD is the radius. अब किसको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है? कोण को. What is the question? The question is prove that the volume of the largest cone, which can be inscribed in the sphere of the radius R, is the 8/27 of the volume of the sphere. Now, what is the volume of the cone? The volume of the cone is 1/3 pi R square X. What is the R? This is the R. What is the R? The R is the BD. The volume of the cone. The volume of the cone is the BD. Now 1/3 pi R square H. And what is the height? The height of the cone is the R plus X. Now the volume is the pi/3 BD. BD square means R square minus X square, and this is the R. This is the equation. ये equation. And what is the variable? Only one variable X. Only one variable. एक variable में convert करना है. इसमें दो variable थे, radius और इसका height. तो हमने क्या किया? We change in the one variable. Now differentiate the equation. The dV upon dx. The dV upon dx. dV upon dx. y/3. The first function r square minus x square. Second differentiation plus second function r plus x and differentiate minus 1. Then this is the pi/3 r square minus x square minus 2rx minus 2rx, and this is the minus 2x square. Now this is the better. You take the common r plus x. This is the better, and this is the EG. You take the r plus x is the common. Then now r plus x. Then pi/3
and r plus x is the common, r plus x is the common, then this is the r minus x and this is the minus 2. Then what is the value? The value is the pi upon 3 and r plus x and r minus 3x. R plus x and r minus 3x. This is the value of the dv upon dx. Now, you differentiate, you equate the, again differentiate, equate the dv upon dx is the 0 when dv upon dx is the 0, then the value of x, that implies x is the minus r, this is not possible. And or then like again implying x is the r upon 3, dv upon dx. Now again differentiating d2b upon dx square, pi upon 3, first function r plus x, second का differentiation minus 3 plus second function r minus 3x and this is the equal to pi upon 3 minus 3r minus 3x minus 3r minus 3x plus r minus 3x plus r minus 3r minus 3x plus r minus 3x, then this is the pi upon 3 and minus 6x minus 2r and minus 6x minus 6. You take the minus 2 in the common. When my d2b upon dx square, take minus 2 is common, to minus 2 pi upon 3 and r plus 3x. Now, when x is the negative, this is the positive. When x is minus r, then the second order derivative d2b upon dx square is positive. And x is when x is r by 3, then d2b second order derivative is negative. अब नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है कि this is the maximum. The negative sign of the second order derivative is the, so this is the maximum. Now, अब प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन is 8/27. Now, what is the volume of the volume? What is the volume?
This is the volume. The volume is pi upon 3 r square minus x square, r square minus x square, and r plus x. R plus x. What is the x? X is the r by 3. X is the r by 3. Then this is the pi upon 3 r square minus r by 3, then r square by 9, and r plus x, r plus r by 3, r plus r by 3. अब ये क्या हो गया? दिस इज द पाई अपॉन 3 9 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, जो 8 r स्क्वायर अपॉन 9 and 3r plus r. This is the 4r upon 3. Now you collect the 8 upon 27. 8 upon 27. 8 upon 27 को बाहर निकाल. What is the remaining? 4 upon 3. 4 upon 3 pi r. This is the volume. This is the volume of the cone. Cone का volume क्या है? 8 upon 27 4 upon 3 pi r cube. यही आपको प्रूफ करना था. क्या प्रूफ करना था? कि prove that the volume of the cone, which is then described as a sphere, is the 8 upon 27. 8 upon 27 is the volume of the sphere. Understand? Now students, you solve the NCERT questions, NCERT word problem question, and miscellaneous questions related to the maximum, minimum. And in one lecture, we discussed the increasing, decreasing function. We study the rate change, but rate change is deducted. Then in the next lecture, we discuss the increasing, decreasing function. Increasing, decreasing function. Now, the homework, you solve the board questions given in the R.D. Sharma. I think this is the 40 or 50 questions. And in miscellaneous question related to the maxima, minima, and tangent, normal. Okay, this is the homework. And the next lecture we discuss the increasing, decreasing function. Okay.